Welcome, guys. Welcome to another episode of Markets Wrap with Mr. Pankaj Pandey. Pankaj, as usual, welcome back to this show. Absolute honor to host you as usual. कैसे हैं आप? All good, Gaurav. Good Yes. afternoon. तो एज यूजुअल हमारा पहला होता है कि हम मार्केट के बारे में बात करते हैं. एफओएमसी मीट डन, रेट हाइक नहीं हुआ, स्टेटस क्वो मेंटेन्ड. सो व्हाट इज योर टेक ऑन द इंडेक्स एज अ होल एंड आल्सो ऑन द फेड commentary that was made, and then we move on to the other topics. So some bit of a bounce back we've seen this week. So Nifty में करीब 1% का गेन था. मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ज्यादा बेटर करे, 2% के ऊपर गेन था. बट आई थिंक हाईलाइट वाज यूएस मार्केट्स, बिकॉज यूएस मार्केट में काफी बीटन डाउन थे, तो ओवरऑल वहां पे रिकवरी 4 या 5% की हुई है अक्रॉस इंडाइसेस. एंड लास्टली बिकॉज यूएस एफओएमसी मीटिंग में कुछ खास निकल के आया नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था. रेट्स उन्होंने मेंटेन किए एंड ये सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम रेट्स होल्ड किए हैं. तो एक एक्सपेक्टेशन ये जरूर बिल्ड हो गई कि आगे जाके शायद रेट हाइक नहीं होगा. एंड जो अगले साल जून में रेट कट का एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है. एंड क्रूड में भी ये करीब 4-5% का डिक्लाइन था. तो आई थिंक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप यील्ड देखें, चाहे उनकी 2 ईयर हो, 10 ईयर हो या 30 ईयर, सब 5% के नीचे गए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट प्रिवेल किया है, and उसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल बॉयंसी अच्छी थी. मार्केट ब्रेथ काफी सुधरी. बट आई थिंक बड़ा मूव आने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है. आई थिंक जब तक वहां पे रिवर्सल नहीं आएगा तब तक शायद आपको एफआई इन्फ्लोज भी नहीं मिलेंगे, एंड तब तक आपको जो निफ्टी में एक बड़ा कवरिंग एक्सपेक्टेड है, आई थिंक वो अभी भी मिसिंग है. तो आई थिंक वी आर होपफुली वेटिंग फॉर दैट कि डॉलर में एक रिवर्सल आए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका इन्फ्लोज बेटर होगा और निफ्टी में एक जो मोमेंटम है वो फर्दर एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स 19,600 काइंड ऑफ लेवल. आई थिंक उसके बाद में होगा. निफ्टी क्रॉस करता है तो ओवरऑल जो हमारा पुराना टारगेट है ये कैलेंडर ईयर का 20,700, आई थिंक आइडियली शुड टच. सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर टाइम्स ahead. And I think one good thing in this in Bull's favor would be the long to short ratio. If you see of FIIs, that has reached an extreme mark right now, which we had seen in March 2023, the elevated level. I think 1,75,000 was the latest number, which is 89% roughly. तो इसके ऊपर अब क्या ही बेचेंगे ये लोग? तो there can be a high chance of short covering in November series, and let's see whether it comes or not. So Pankaj, any range for Nifty for this week going ahead? Do you have any range in mind? सो वन इज आई थिंक जो लोअर रेंज हमारा 18,700 या 18,800 थी, आई थिंक मेरे हिसाब से वो 19,000 से 19,600 के बीच में होनी चाहिए. तो सपोर्ट थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट, क्योंकि रिस्क थोड़े कम हो गए हैं. आपका जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट होते हुए नहीं दिख रहा है. एंड सो दैट वे सपोर्ट थोड़ा मैं ऊपर करना चाहूंगा टू 19,000 काइंड ऑफ लेवल्स, एंड ऑन अ हायर साइड 19,600 ऑन द हायर साइड. Okay, perfect. Moving on, we are entering the festive month. दशहरा हो गया, दिवाली आने वाली है. बहुत like one of the chirpy month and very good vibe month बोलते हैं इसे. तो और दशहरा दिवाली के टाइम पे auto is a very important sector. Like gold and auto are two things that Indians prefer buying. So and I think we saw Tata Motors results as well, which was very good. So मैं आपका auto sector पे पूरा view लेना चाहूंगा. What is your sector, and how do you feel the mood is going into the festive season right now? तो जैसा गौरव आपने कहा, फेस्टिविटी के वजह से ओवरऑल जो होलसेल वॉल्यूम से काफी अच्छे नंबर जो हैं अक्रॉस कैटेगरीज, एक्सेप्ट फॉर ट्रैक्टर्स. तो मैं जो शुरुआत करूंगा से टू व्हीलर स्पेस है. तो हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है, जो इसके वॉल्यूम है वो 2 साल के हाईएस्ट पे है. 5.7 लाख का यूनिट आया है. देन आयशर के नंबर थोड़े लगेंगे कि वाई वाई 3,000% का ही ग्रोथ है, बट उनका बेस बड़ा था. अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने बात करना चालू कर दिया है कि रूरल साइड में डिमांड थोड़ी बेहतर होती हुई निकल के आ रही है. बिकॉज टू व्हीलर जो सेगमेंट था वो इसीलिए इम्पैक्टेड था बिकॉज रूरल सेगमेंट में कहीं ना कहीं डिमांड सॉफ्टर थी. एंड पैसेंजर व्हीकल साइड में सारे नंबर्स अच्छे थे. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आई थिंक हाईएस्ट नंबर पोस्ट किया है. 43,700 के आसपास में करीब 35% का ग्रोथ था. मारुति के नंबर भी 19% हायर थे, 1.95. एक चीज अच्छी मारुति ने ये भी कमेंट की कि जो फेस्टिव सीजन में ओवरऑल एक्सपेक्टेशन था कि आपके करीब 10 लाख गाड़ियां बिकेंगी, तो 12% का ग्रोथ एस्टिमेशन था. तो कहीं ना कहीं मारुति ने हिंट दिया है कि उनका और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है इस बार फेस्टिव सीजन में 18% हो सकता है. सो दैट वे एक काफी अच्छी कमेंट्री आई इवन फ्रॉम मारुति ऑल्सो.
एंड सीवी स्पेस में भी परफॉर्मेंस ठीक था, तो वाई वाई पे आपको ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ दिखती है। बट आई थिंक सबसे अच्छा जो किया है उसने आइशर मोटर ने किया है, वहां पे करीब 24% का उनका ग्रोथ था। ट्रैक्टर एक क्योंकि आपका फेस्टिव सीजन का जो डेल्टा है वो पिछले साल अक्टूबर में थी, दिवाली इस बार नवंबर में है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ट्रैक्टर में वो बम्प अप नहीं दिखा। ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा था, तो हायर वेज पे और अच्छा करना थोड़ा मुश्किल था। सो दैट वे आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे हैं फॉर द एंटायर ऑटो एज अ पैक, एंड इज अ वेरी गुड साइन फॉर द अपकमिंग कन्वेंशन। Absolutely. So are we maintaining the 810 rupee target for Tata Motors still? सो टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप मार्जिन देखेंगे तो उनके जो सीवी में मार्जिन थे वो अगेन डबल डिजिट में आ गए। पीवी में भी मार्जिन करीब 100 बढ़े हैं। जेएलआर के जो नंबर्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। जो उनका कैश फ्लो का गाइडेंस था वो सब मेंटेन किया हुआ है। तो आई थिंक टाटा मोटर्स के नंबर काफी बेहतर है। आई थिंक सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे इनका 3,000 के Yes. ऊपर प्रॉफिट आया है। Absolutely. So Pankaj, I think सब कुछ अब हटाते हैं. Let us move on to our main segment. Like a lot of people were asking about Muhurat picks, Diwali pick. So we had promised that Diwali के day पे नहीं, but we'll share some picks before Diwali. So I think starting of the month लोगों की सैलरी भी आ गई है, एसआईपी भी कर सकते हैं, पैसे डालने के लिए इनको एलोकेट करना है कुछ. So we'll start with your Muhurat picks. कितने हैं टोटल में, और let's take one by one in detail. सो गौरव, 7 रिकमेंडेशन है एंड सभी में अगर आप देखेंगे तो 20 से 25% का अपसाइड इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। इसमें दो लार्ज कैप्स हैं, बट इन जनरल जो हमारा फोकस रहा है कि क्वालिटी कंपनीज हम रेकमेंड करें, एंड बिकॉज ये हमें लगता है कि ओवरऑल जो टाइम है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे अच्छा टाइम है एंड अच्छी कंपनियों में। तो शुरुआत में करना चाहूंगा। आई थिंक एल एन टी इज अ वेल नो 3560। लार्जली रीजन यही है कि केपेक्स पे सरकार का काफी ध्यान है, काफी एग्रेसिवली सरकार केपेक्स कर रही है, करीब 3% ऑफ ओवरऑल जीडीपी कर रही है। एंड कंपनी के जो नंबर्स थे वो भी काफी अच्छे थे। इनकी जो ऑर्डर बुक है काफी बड़ी है, 4.5 लाख करोड़ की है। जो इनका ऑर्डर बुक ग्रोथ था लास्ट क्वार्टर में 22% था। एंड जो पाइपलाइन है वो भी करीब 9 लाख करोड़ के आसपास में है। तो करीब इनका 15% का ऑर्डर बुक का ग्रोथ बिल्कुल लगता है कि पॉसिबल होगा। एंड ऑन दी रेवेन्यू साइड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो परसेंट से ग्रो करेगा, एंड प्रॉफिट करीब 26% से ग्रो करेगा। तो आरओई जो 18% वो अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। तो एल एन टी आई थिंक बेस्ट प्रॉक्सी है फॉर द एंटायर केपेक्स साइकिल जो कि पैन आउट होने वाली है, हो रही है। दूसरा ये कि इस केपेक्स को सपोर्ट करने के लिए आपको बड़ा क्रेडिट चाहिए। सबसे बड़ा जो लेंडर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इनका जो बैलेंस शीट का साइज है वो 55 लाख करोड़ है। एंड I'll just stop you और मैं ना कमेंट्स में टारगेट डाल देता हूँ, बिकॉज क्या है ना, वी हैव ऑलमोस्ट 100 व्यूअर्स वाचिंग अस टुडे, सो इट विल बी बेटर फॉर देम. देन वील टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एलएनटी टारगेट वुड बी 3950, राइट? 3560। 3560. 560, या ओके, कंटिन्यू. सो एसबीआई सबसे बड़ा लेंडर है जहां पे इनकी जो बैलेंस शीट साइज है वो 55 लाख करोड़ है। जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 14-15% ग्रोथ कर पाएंगे वो। एंड लार्जली जो ग्रोथ होगी वो एमएसएमई और रिटेल से ड्राइव होगी। एसेट क्वालिटी का कोई इश्यूज नहीं है, पीएसयू बैंक है। तो दैट वे इनका जो नेट एनपीए करीब 0.7% है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आरओईज वगैरह अपनी 16-17% पे मेंटेन कर पाएंगे। एंड देन जो इनका वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है, करीब 1 टाइम FY25 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका पूरा देश इकोनॉमी ग्रो करे और बैंक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। बिसाइड्स काफी और सारे और से ट्रिगर है। तो ओवरऑल ये बैंक हमें काफी अच्छा लगता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 725। So SBI target is 725. We can move on. Viewers who are watching us, I will put this on Telegram as well so that we get the entire list at one place with target price and current market price. So I will be quoting it there as well. Pankaj, third pick. सो देखिए, भारत डायनेमिक्स हमें काफी टाइम से पसंद था। फर्स्ट हाफ इनका या फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू मिस काफी आया था बिकॉज एग्जीक्यूशन मिस हुआ था। अभी इसके नतीजे आज ही आए हैं, काफी अच्छे नंबर्स हैं। कंपनी का जो ओवरऑल गाइडेंस फॉर ये साल है करीब 3,000 का है। तो आपका जो अगले 2 क्वार्टर में है वो रन रेट 1,000 करोड़ के ऊपर या आसपास आना ही चाहिए।
देन अच्छी चीज ये है कि ओवरऑल में देखा है कि मिसाइल्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल, स्पेशली इफ यू लुक एट द करंट कॉन्फ्लिक्ट. सो ये कंपनी एट द फोरफ्रंट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स. इनके डीआरडीओ से टाई अप है, प्लस जो भी लोकलाइजेशन होगा इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा. इसकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, 11 टाइम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ है. तो इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ विजिबिलिटी अगले 2-3 साल के लिए भी काफी अच्छी है. प्लस जो एक लॉन्गर टर्म में भी लग रहा है कि पाइपलाइन जो होगी मिसाइल्स की करीब 50 अरब करोड़ की होगी. तो ये कंपनी उस हिसाब से काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है. ओवरऑल जो हमें लगता है कि इसका ग्रोथ होगा और टॉप लाइन पे करीब 33% का होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन वगैरह पिकअप होगा. बॉटम लाइन ग्रोथ और भी अच्छी होगी, 53%. एंड ये रिलेटिवली 22 के मल्टीपल पे है. तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा नंबर में कैचअप आएगा, और नंबर क्योंकि बेहतर करेंगे तो ओवरऑल स्टॉक में भी प्राइस परफॉर्मेंस दिखना चाहिए. यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1260 रुपए है. Okay. Pankaj, there's a question in the comment section. Ki what is the holding period? So I suppose it would be Diwali to Diwali, right? 1 year holding period. Yes, 12 months. Yeah. So anyone who's confused with the holding period, it is 1 year. Yeah, Pankaj, next pick. सो देखिए, रियल एस्टेट सेल्स काफी बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगले 1-1.5 साल में जो भी आपके जो रियल एस्टेट या बायर्स को जो भी डिलीवरी मिलेगी, तो आगे जाके वुड पैनल जो है उसकी डिमांड हमें लगता है कि ओवरऑल अच्छी रहेगी. एंड वुड पैनल इंडस्ट्री अच्छा करना चाहिए. उसमें जो सबसे बड़ा कंपनी निकल के आता है वो सेंचुरी प्लाई निकल के आता है. अब तक इसके नंबर्स थोड़े सॉफ्टर थे, बट ओवरऑल हमें क्या लगता है कि इसके जो नंबर्स होंगे, चाहे वो इनका प्लाईवुड सेगमेंट हो जो कि 50-55% कंट्रीब्यूट करता है, या इनका जो मास लैमिनेट सेगमेंट है 18% करता है, या फिर आप एमडीएफ एज अ सेगमेंट की बात कर लीजिए तो वो करीब इनका 18% कंट्रीब्यूट करता है. आई थिंक ये जो सारे सेगमेंट्स हैं अलग अलग इकोनॉमिक सेगमेंट्स को केटर करते हैं, एंड इन सभी में हमको डबल डिजिट ग्रोथ नजर आती है. जो मार्जिन प्रोफाइल है पहले फर्स्ट हाफ में या FY 24 में थोड़ा सॉफ्ट रही है, एंड रहने की उम्मीद है, बिकॉज आपके जो टिम्बर के प्राइसेस ऊपर गए थे. बट Right. ओवरऑल हमें लगता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी. एंड ये कंपनी क्योंकि सबसे बेटर मेट्रिक ऑफर करती है वुड पैनल इंडस्ट्री में, एंड जैसे जैसे आपके रियल एस्टेट की जो डिलीवरीज होंगी एंड लोग घर बनाएंगे, तो आई थिंक इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी. और इसीलिए ये कंपनी हमें अच्छी लगती है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 7.5. ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया ऑलरेडी. सेंचुरी प्लाई एंड टीवी टुडे नेटवर्क. सो मेरा नेक्स्ट जो पिक है वो टीवी टुडे है. सो आई थिंक इलेक्शन टाइम आ रहा है एंड देन फेस्टिव सीजन भी चल रहा है. टिपिकली इलेक्शन टाइम में और फेस्टिव सीजन में एड स्पेंड बढ़ जाते हैं, एंड टीवी टुडे को उसका फायदा मिलना चाहिए. तो सेकेंड हाफ जो होगा वो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि इसका काफी अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एड रेवेन्यू ग्रोथ. एंड एक तो चीज दूसरा ये कि आपके जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो राइट. नेक्स्ट 3 से 6 महीना इसके लिए काफी अच्छे रहने चाहिए. एंड पिछले भी बार भी हमने देखा है कि जब भी इलेक्शंस आए हैं तो इस कंपनी को काफी फायदा होता है. तो दैट वे ओवरऑल में लगता है कि ये कंपनी उस हिसाब से बेनिफिट करना चाहिए. वैल्यूएशन इसका सस्ता है, 12 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है, तो हमें लगता है कि ये अच्छा करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 260. ओके. टीवी टुडे टारगेट प्राइस 260. ओके. पंकज, थोड़ा मिक्सिंग करते हैं इंग्लिश हिंदी, बिकॉज व्यूअर्स आर आस्किंग दे वांट व्यूज इन इंग्लिश एज वेल, सो वी विल कीप इट mixed here for other people as well. So we are done with L&T, we are done with BDL, we are done with TV Today Network, and we are done with Century Play. 4 down. We'll wait for the fifth one. So, Spandana Smurti Financial is another company which I would want to recommend with a target price of 1100. Okay. Now, this is one company in the microfinance space. And microfinance, if you look at, most of the players are talking of 35-40% kind of a growth rate. And this company is also sort of poised to deliver something similar numbers. So, management is very confident of delivering 35-40% growth in AUMs. Now, the challenge was earlier that you had higher credit cost post-COVID, but things have a lot more stabilized because this company, ये जो है company women borrowers को loan देती है, प्लस इनका ब्रांच एक्सपेंशन चल रहा है. तो अगले पिछले 6 क्वार्टर में इनका काफी ओवरऑल देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर ऑपरेशनल मेट्रिक्स, and because of which we feel that good growth rate of 40% plus ROA is at 4.5%, and credit cost at a moderate 2% ideally should help this company to sort of deliver far more better set of numbers.
And valuation is also attractive. So we have valued it at about 1.8 times adjusted book, and with a target price of 1100. Okay. We have Spandana Spurti, target price है 1100, 1100 रुपए का target price है, 900 रुपए का current price है. We are 6 down. I think we are left with one last. So the last company is Coromandel International. Now, Coromandel International typically is a Murugappa Group company. So group is very good if you look at from a shareholder perspective. Now here our target price is 1330. Now Yeah. the reason for liking the stock is the company is doing number of things. One, I think they are market leaders in some of the agrochemical products, especially fertilizers like say SSP, which is single super phosphate, where they have a market share of some 14 odd percent. NPK या DAP segment में भी इनका market share करीब 17% है. Now company इंटीग्रेशन तो करीब 400 करोड़ का ये खर्चा कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाने में. Plus, they are venturing into nano DAP. So nano DAP again is expected to sort of do very well going forward because from a farmer perspective, it is quite beneficial, cost effective. Then companies also exploring newer ventures like CDMO or specialty chemicals. Now, one of the attractive things for this company to sort of be liking this company is that company is foraying into drone business. Now, and company के पास में करीब 165 करोड़ का order book है for logistics drone for use in both for Indian Army plus IFCO for typically precision agriculture. So I think ये company काफी interesting चीजें कर रही है with a good group which is got so उनके जितने भी आप group companies देखेंगे काफी अच्छा कर रही हैं. I think this is another company which we feel that has all the ingredients to do very well, and which is why we are liking this company with a target price of 1330. Absolutely. I think all the Murat picks have been shared. There is a question in comment section. Someone is asking you on HDFC Bank. I know we have covered extensively where you have said merger. We still have one query there. So will you like to take that up? Sure. So HDFC Bank, see the challenge is that growth number, asset quality, everything is good. The only concern for HDFC Bank is that your NIMs used to be 4.1%. Now it is down to 3.4. So, HDFC Bank is likely to recoup some 30 bips of NIMs. So from say 3.4 to 3.7 in the next say 1 or 2 quarters. One, because they have excess liquidity which they are going to sort of deploy. But the balance recoupment again going back to say 4.1 is going to take time because you are sort of expanding your branch network. You need to get low cost deposit, and that is going to sort of take some time. The other factor is that you need FI flows. It's a big stock with a big market cap, so you need big money to sort of do this stock to sort of do it. So I think both of it as of now is going to probably take some time. FI के Absolutely. शायद flows आ सकते हैं जल्दी, but I think जो कंपनी के margin improvement है वो I think 3 से 4 quarter लगेंगे. तो somewhere down the line I think HDFC slow move करने वाला है unlike the market. So मेरे हिसाब से 1 साल में शायद ये इतनी जल्दी outperform नहीं करेगा market. Okay. There's a question on Ashok Leland. So viewers, we have just covered the auto sector and OEM pack, and where Pankaj is bullish on this segment overall. So अगर आप अशोक लीलैंड पूछ रहे थे, asking for Ashok Leland, he is bullish on this stock. Do you have any targets for this? I'll just keep it very brief for Ashok Leland here. So Ashok Leyland, Tata Motors की जैसे numbers अगर हम देखें, CV business delivered a margin of double digit. I think Ashok Leyland is also expected to sort of do well. Auto numbers for last month was also good, so they did about 14% kind of a volume. So we would expect a good set of numbers from Ashok Leyland. I would not be surprised given the valuation comfort. It can deliver 15-20% returns in the probably 6 to 12 months. Okay. So I think the Jamna Auto, people asking for Jamna Auto. Jamna Auto is already a Shubhnivesh pick. So the targets are already shared. You can come in our Telegram channel and just search for Jamna Auto. You will see the targets and a rationale behind that recommendation.
Pankaj, have many comments. Do you want to take it or okay, great. Someone is asking what is your view on Reliance? Okay, this month expiry horizon we won't take because we'll be more of investment side, not trading side. So I'm sorry, I won't be taking that. What is your view on BHAL? So BHAL needs to undergo a big transformation shift, largely because if you look at the current power capacity in India, it's about 4,25,000 megawatts, and you have about 2,37,000 kind of a thermal capacity, and what is expected to be added is some 25,000-30,000 megawatt in the next 5-6 years. So BHAL has limited amount of work on its plate. So they need to sort of diversify into newer segment for this stock to do well. Otherwise, I think NTPC looks a lot more better, or any of the other companies which are focusing more on renewable energy, I think is going to do a lot more better, given that the opportunity pie there is fairly large. Okay, I think that's it. Rest are all trading questions like view for 20 days and all those. I think we do not discuss it here. To discuss that, viewers, we have our expiry stream. Rajdeepak Singh, he's master of that. So you guys can come on every Thursday or Wednesday when we do, or tomorrow 11 a.m. with options ki baat ICICI Direct ke sath, where we discuss trading related side. Friday is purely for investment and next week's market thing. So Pankaj, as usual, thank you so much. Absolute pleasure hosting you and see you soon. I think आप छुट्टी पे जा रहे हो तो 2 हफ्ते का ब्रेक लेने वाले हो आप हमसे. See you, and I wish all the listeners a very happy Deepavali. Happy Diwali to you and happy Diwali everybody. Have a great Diwali and a great New Year. Thank you so much. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.